हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटेनेशन केमिस्ट्री। और आज से शुरू करने जा रहे हैं हम एक नई सीरीज़ जिसमें हम कंप्लीट करेंगे आईएससी क्लास 11th की पूरी केमिस्ट्री की बुक। और क्योंकि बाकी तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें बुक से पढ़ाया जाएगा। अगर आपको बुक रीडिंग में प्रॉब्लम होती है या टॉपिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है और आपको बुक रीडिंग भी करनी है और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि 11th के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएँ, क्रिस्टल क्लियर हो जाएँ, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और वीडियो को लाइक करना अगर आपको कंटेंट पसंद आए। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस कि 11th क्लास में आपको पढ़ना क्या होता है। जैसे हम 10th तक केमिस्ट्री पढ़ते थे, आपको एक बुक लगती थी, ठीक है। अब 11th से ऐसा नहीं होता है। 11th से आपको बुक तो एक ही है, बट उसमें 3 सब डिविजन्स हो गए हैं केमिस्ट्री के। ऑल्दो वो 10th तक भी थे, पर वो इतने क्लियरली नहीं पता चलते थे। अभी आपको बिल्कुल डिवाइड करके पढ़ाया जाएगा। एक पोर्शन होगा बुक का जिसको हम बोलेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री, दूसरा पोर्शन होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत थोड़ा है 11th के सिलेबस में, और तीसरा पोर्शन होगा जिसमें सिर्फ बेसिक्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो आप अच्छे से पढ़ना 11th की, क्योंकि 12th में वही कॉन्सेप्ट जो हैं वो वापस से रिपीट होंगे और आपको पुराने आने चाहिए ताकि आप 12th का पढ़ सको, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आते आते ना सब लोग इतना बोर हो जाते हैं, वो ऑर्गेनिक को सीरियसली नहीं लेते मोस्टली। पर अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आप अच्छे से पढ़ना, ओके। तो जो सबसे बड़ा पोर्शन है अगर आप बुक का देखोगे तो वो होगा फिज़िकल केमिस्ट्री का, ठीक है। और इसके नंबर भी 41 मार्क्स जो है सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री से आएगा पेपर में। ये आप बुक का पहला पेज खोलोगे तो आपको दिखेगा कि 70 मार्क्स की थ्योरी है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है जो आपको कॉलेज में कराया, वो कॉलेज कह रही हूँ, स्कूल में कराया जाएगा। फिर प्रोजेक्ट वर्क है 10 मार्क्स का जिसमें आपको फ़ाइल बनानी होगी मे बी, या कुछ भी प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्कूल। और जो तीसरा है वो है प्रैक्टिकल फ़ाइल, वो तो जो आप प्रैक्टिकल करोगे वो रिपोर्ट करोगे, उसके 5 मार्क्स हैं। ये सब तो स्कूल वालों के अंडर है। थ्योरी का पोर्शन 70 मार्क्स का है और उसमें भी फिज़िकल केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा है। अब फिज़िकल केमिस्ट्री जितना भी होता है ना वो इंटरलिंक्ड होता है मैथ्स और फिज़िक्स से, जैसे कि वर्ड बता रहा है। तो इसमें ना कॉन्सेप्ट जो भी होंगे वो कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। हम इसमें क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी बनी, कोई प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ, ठीक है। और हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे हमें पता है हम मिल्क को लीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री में हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, तो हम मिल्क के अंदर कितने कितने अमाउंट में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, जस्ट एन एग्जांपल। वो सब चीज़ें जो आती हैं ना वो फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट है। सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हम रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है जैसे उसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और लैबोरेटरी में प्रिपरेशन कैसे करते हैं एलिमेंट्स के यूजेज से, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना भी है ना इसमें प्लांट बेस्ड स्टडी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब कुछ होता है। और इसके साथ में जितने भी लिविंग चीज़ें होती हैं ना सब एक तरह से हाइड्रोकार्बन से बनी होती हैं, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है। और वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर होता है बेंजीन। ये सारी चीज़ें जितने भी कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं अमाउंट में, इसलिए उसको अलग ही ब्रांच दे दी है, उसको हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। आई होप आपको ऊपर मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें फिज़िकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर कवर करने हैं हम वो देखेंगे सबसे पहले। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में सेक्शन ए है आपका। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और हम इसी से स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर्स, ठीक है। इसमें है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, पार्टिकुलेट नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, Berzelius and Avogadro's hypothesis, atoms and molecules, atomic and isotopic masses and their determination, chemical equivalents, molecular mass, Avogadro's number and mole concept। यहाँ तक Avogadro's number and mole concept तक तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा। इसके आगे भी पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, बट डिटेल में नहीं पढ़ा है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे।
ठीक है। इसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव मॉलिकुलर मासेस, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस, एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूले, स्टोइशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होएगा। इसमें हम पहले चैप्टर रीडिंग करेंगे, फिर एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे सारी की सारी, और उसके बाद में हम समरी के लिए अगर पॉसिबल होता है तो वन शॉट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड्स मॉडल आया था सबसे पहले, देन बोहर्स मॉडल आया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारी थ्योरीज जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने दी, वो सब है। फिर थर्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। आपका एक चैप्टर होता था द पीरियोडिक टेबल, ये उसी का एडवांस्ड वर्जन है ये वाला चैप्टर। फिर फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। इसमें आप पढ़ोगे कि बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो किस तरह से फॉर्म होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें बहुत सारे अप्रोचेज होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बॉन्डिंग डिसाइड करती हैं, टाइप ऑफ बॉन्डिंग डिसाइड करती हैं, शेप कैसी होती है मॉलिक्यूल्स की, मतलब ये विजुअलाइजेशन वाला चैप्टर है। जैसे आपने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स किस किस शेप में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये सब क्या हो गया, 3D विजुअलाइज करना किसी चीज़ को 2D सरफेस पे, वो चीज़ें आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो बेसिकली। फिर उसके बाद में है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। इसमें आप पढ़ोगे कि विद टेम्परेचर चेंजेस कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म हुआ, या कितना एनर्जी रिलीज़ हुई या एनर्जी गेन हुई, मतलब एनर्जी चेंजेस पढ़ना थर्मोडाइनमिक्स में। एंथैल्पी चेंजेस पढ़ना। अब इसमें लॉज हैं, डिफरेंट लॉज हैं। ये चैप्टर जो होता है ना थर्मोडाइनमिक्स, ये फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं, पर फिज़िक्स में हम फिज़िक्स के हिसाब से पढ़ते हैं, मतलब मैकेनिकल वर्क के हिसाब से पढ़ेंगे, वहाँ पे मैकेनिकल वर्क कितना हुआ। यहाँ पर हम लोग इसको, ये चीज़ों का रेलेवेंस केमिकल रिएक्शन में कैसे होता है वैसे करेंगे, वैसे पढ़ेंगे। इसके बाद है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम में कि एक रिएक्शन जो ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, मतलब ना वो उसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है और ना वापस से रिएक्टेंट बन रहे हैं। जब वो स्टेज आ जाती है किसी रिएक्शन में तो हम उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और इसके लिए एक प्रिंसिपल भी है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ये जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी तो आपको समझ आएगा। इसमें इक्विलिब्रियम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो ये इतने सारा जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट है, और इसमें कुछ भी रटने का नहीं है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि केमिस्ट्री तो पूरा रटना पड़ता है, कुछ समझ नहीं आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं रटना होगा। इसमें बस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, जैसे मैथ्स पढ़ते हो, जैसे फिज़िक्स पढ़ते हो, और सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसमें कुछ भी रटने का नहीं है, और मैक्सिमम मार्क्स इसी के होते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में आपको टेबल टेबल तो याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद में हमारे पास आ गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है, मतलब इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिटेल में है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट डिटेल में है, और रिडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, उनको उनकी बैलेंसिंग कैसे होती है, बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर सेक्शन सी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। मैंने बताया कार्बन की ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत स्पेसिफिक होती हैं। कार्बन अपने आप में एक बहुत, क्या बोलते हैं, यूनिक एलिमेंट है, तो इसलिए वो थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। वो डायमंड जैसा सुंदर हीरा भी फॉर्म कर सकता है, और वो ग्रेफाइट जैसा ब्लैक कलर का मटेरियल भी फॉर्म कर सकता है किसी भी कंपाउंड के साथ कंबाइन होके खाली। तो इसकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। इसके लिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत तरह के कंपाउंड्स में डिवाइडेड है। उसकी सब कैटेगरीज हैं, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनॉल्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, वो सब कुछ पढ़ेंगे, और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं कंपाउंड्स का। ये वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये आपको काम आएगा 12th में भी। अदरवाइज़ आपको 12th करने के लिए फिर से वापस से 11th का पढ़ना ही पड़ेगा, वरना 12th का समझ नहीं आने वाला। आई एम टेलिंग यू दिस ऑलरेडी। फिर हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन है, और इसमें थोड़ा बहुत वो भी बताएंगे कि किस किस तरह से ये लोग रिएक्ट करते हैं। ये भी सब समझने का ही है मोस्टली, पर हाँ थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा ना कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये आपके सिलेबस की बात हो गई। देखते हैं अगली वीडियो कब आएगी और किस तरह से आगे का हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगली वीडियो आपको नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर मिल जाएगी, पहले ही भी मिल सकती है। बाकी तब तक के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये वाला जो टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ना चाहते हो तो मैंने बहुत पहले एक प्लेलिस्ट बनाई थी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हो ऊपर ऊपर से। हम ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर हम वी विल कवर, पर आप इसको गो थ्रू कर सकते हो इतने। बाकी अगर आपको इंग्लिश में भी वीडियो चाहिए सो प्लीज़ मेरे को बताना। वैसे ये वाली जो वीडियो है जिसमें हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ये इंग्लिश में भी है, आगे आपको इंग्लिश में मिलेगा। और मैंने कोई वो नहीं लगाया है एआई वगैरह, मैं ही बोलूँगी इंग्लिश में, बहुत ही सिंपली। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो आप अभी वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और वापस ज़रूर आना आगे की वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, so this part of the video is for only English viewers of my channel. So in this particular class you are going to study chemistry in three realms. Okay, physical chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry. Apart from all the three topics, physical chemistry holds the highest weightage of marks. If you want to see that, you can check the first page of your book, that is Newton chemistry. Okay, so in today's video we will be going to discuss about the different topics which will be covered throughout the class 11th chemistry, and also we are going to discuss about how we are going to cover these topics in our channel or in my channel. Okay, so in these topics, first of all, about the physical chemistry holds 41 marks, that is the highest weightage in the theory part. You have two papers for this particular class 11 syllabus, that is theory and practical. For theory, you will be having a paper of 70 marks in your finals, and apart from that 70, I have told you earlier also, 41 will be of physical chemistry, and 6 marks will be of inorganic chemistry and 23 of your organic chemistry. Okay, so in these topics, uh, physical chemistry is concerned with the mathematical calculation and the conceptual knowledge of the terms such as your concentration, and so in this we will be studying about the quantities. Let me give you an example. if you are taking if you are studying the structure of sugar, suppose, so it will be made up of two particular quantities, that is sucrose and glucose. Sorry, it is made up of sucrose, which is about I think glucose, and 2 moles of glucose. So these things like what is a mole, what is Avogadro number, and how we are going to use different quantities to obtain different kind of products, and how does the external factors such as temperature, pressure, and your uh, concentration of different reactants, how they will affect the rate of reaction, and how the product formation would be different if the conditions would be different, will be studied across the topic physical chemistry. As far as the inorganic chemistry is concerned, we'll study about the inorganic compounds. In that, inorganic compounds means the elements which are prepared basically in laboratory, or how do we prepare certain elements in laboratory. Also, we will study in this particular topic about how does the structures and the theorems given by various scientists uh, changes the or alters the products formed in chemical reactions. So this is all about how the chemical reactions will occur in case of inorganic elements, as on a basic level.
Then we have your organic chemistry. Now organic chemistry is concerned about the compounds obtained by carbon and hydrogen, specifically carbon. We know that carbon is very unique element, and this is because of its property of catenation, as the name of my channel is also catenation chemistry. So this particular branch of chemistry deals with only the compounds obtained from carbon derivatives. Okay, so I'll tell you one thing. When it is concerned about organic chemistry, you should study it thoroughly, because that concepts which will be taught in class 11th will definitely be going to help you and will be much needed in your class 12th organic chemistry portion, because you have to study it all together again if you will not study it now, and that will create a burden next year for you. So please study organic chemistry thoroughly. And most of the part of the class 11 syllabus is of physical chemistry, and physical chemistry is basically all about the concepts, mathematical formulas, like just like your physics and maths on a general level. Okay, so you don't need to you know memorize everything, or what we call as, you not need not to mug up everything. Like you say that in chemistry there's nothing to understand, we don't get anything, we have to just mug it up. So you don't need to do that. You just need to understand the concept and you need to solve the questions, which would be your should be your approach in physical chemistry. In organic chemistry, very little portion is there, but you have to learn certain parts of it. You need to understand what an oxidizing agent is and what different oxidizing agents could do. And in case of your organic chemistry, you need to learn certain portions, like you need to learn how an aldehyde works, what is its structure. These things you need to learn, otherwise there's nothing to uh, feel stressed or burdened about that we I don't get it, I don't get this subject. You just keep it like you keep your maths and physics topics. So we'll start with the discussion for syllabus. Section A is concerned with physical chemistry. And in that, the first chapter is some basic concepts of chemistry. I'll be covering and starting the videos from this chapter only. This chapter consists of branches of chemistry, particulate nature and classification of matter, properties of matter and their measurement, Dalton's atomic theory, laws of chemical combination, Berzelius and Avogadro's hypothesis, atoms and molecules, atomic and isotopic masses and their determination, chemical equivalents, molecular mass, Avogadro's number and mole concept. So up to here, you have studied in your class 10th also, but on a very basic level. Here we'll study each and everything in utmost detail. Apart from these, some of the topics also, the other topics also you know very well, but we'll be studying them in much precise and detailed way now. Okay. Then we have is your structure of atom. Structure of atom, will be studying the various concepts or theorems given by various scientists to study how an atom looks. One of them is Rutherford, who gave the first model or atomic model, then Bohr. In this chapter, basically, you have to study the electronic configurations, how we do electronic configurations, how we form, uh, how an atom looks like. It's not like your class 10th concepts, it's very different, so please study it carefully. Then we have classification of elements and periodicity in properties, the need of classification and the periodic table. In this chapter, we'll study the concepts, you have studied that in the modern periodic table chapter in class 10th. This chapter is basically that only, but we have to study the periodic table in detailed way, right? Then we have chemical bonding and molecular structures. In this, we'll be studying the different structures and how they form bonds and why they form certain bonds only and what is their shape and sizes. Okay, but it is basically chapter is basically the 3D view. How could you visualize a particular structure and how the structures formed in a certain way only? This could be studied in this particular chapter. So you have to learn certain things in it, like polarity, what is polarity, covalent character, and orders, and that things will be undergoing that or going through that once we reach this chapter. Then we have chemical thermodynamics.
Okay, this chapter, chemical thermodynamics, you have seen that this particular chapter in your uh, physics also. But in physics you will study the physical terms like mechanical work, electronic work, right? So here will there will you will be studying the mechanical work done on the system or by the system. In that way we will be studying that chapter. Here you will study this chapter, how a reaction proceeds if heat changes occurs in a reaction, right? Heat, for heat we give a certain term known as enthalpy. Okay, so sorry, so we use the term enthalpy for heat changes. So how does enthalpy changes chemical reaction, you will be studying in this particular chapter. Then we have equilibrium. Equilibrium is when a reaction doesn't proceed forward also and when it doesn't proceed backward also. It is occurring equally on both the sides. That is the phase called equilibrium. Equilibrium could be of three types. We'll be studying all three of them. And we'll be studying a very important principle known as the Le-Chatelier's principle, and it's very very important. So this chapter is all about mathematics and certain concepts, so we'll be going through this also. Now see, this much is only your physical chemistry part, so you have to cover all this. Okay, so this physical chemistry part is already very very high, and it contains the weightage of 41 marks. So if you will do it very nicely, you'll get very very good marks, or you can get full marks also if you learn the concepts well. Then we have inorganic chemistry. Here we'll be studying just oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent, and how does we balance a redox reaction. That's it. Then we have organic chemistry. So in organic chemistry you will be studying how to name organic compounds. There is a particular way how we name the compounds. Then how we characterize organic compounds, types of chemical reactions and their mechanisms also. And then we'll studying the hydrocarbon part, alkanes, alkenes, alkynes, and benzene, very important, their structures and how they undergo reactions. This is all we have to do in our class 11 topics. Okay, and we'll be starting our videos very soon. As I told earlier also, what you can do is you can watch the playlist of the first chapter, some basic concepts of chemistry. I'll be sharing the link in the description box until I'll start the videos for the very first chapter. And the sequence will be like this: we'll be studying from book one chapter, then we'll be also covering all the exercises, solving all the questions, so that you get an idea how to solve questions also, because this is where I faced problem when I was in my class 11th. Okay, thank you for watching the video. If you like the video, please do subscribe the channel and comment also if you have any problems. Thank you.